এটা হচ্ছে a is equal to 10/0 print a তো এটা আমার এক্সেপশন এটা শো করিব except arithmetic error okay then it is a divide by 0 exception okay so when we define an exception try 10/0 print a except arithmetic error okay এটা ব্র্যাকেট রে আমি লেখা হবো okay তো এটা হচ্ছে arithmetic exception শো করিব না আমি কোনসি নম্বর को 10 ने ଆମେ divisible କରି परिबा नाही যদি ଆମେ 10 ने divisible କରୁଛे তাহলে সেটা ଗୋଟେ exception শো করিব তো সেটারে লেখা হলা it is a arithmetic error okay so write it 10/0 so see there what is the difference here difference is what it is showing you arithmetic error in except we are passing arithmetic error we are passing a exception handling but here we are not passing any kind of exception handler तो एठी हमें कोनोसी exception handler pass कर हमें direct except statement use कर लो तो except print arithmetic exception or else print successfully done is a with no exception right a single try block can handle more than one exception so if you are expecting that there may be more than one exception will appear so you have to use the except statement except exception 1 exception 2 exception 3 then up to exception n okay so try with except statement very try 10/0 except arithmetic error then standard error okay now right Hello. block is a block finally block is a block if exception arises it is execute if exception not arises then also it is execute finite block will always be execute irrespective of the exception so try then you write your code if there is an exception then finally block is execute so it is a last statement of exception handling that is finite okay right Hello, sir. range exception so range exception is what you can explicitly throw an exception किसी exception एमती अछि जो exception गुडा कर आमे माने प्रोग्रामर एटा डिफाइन करछ आउ किछि एक्सेप्शन अछि जेमति कि आमे हमर रिक्वायरमेंट हिसाब रे से एक्सेप्शन रा आमे डिफाइन करछ जेमति कि सपोज देखियो इधर फर्स्ट टाइम पे हमर लॉकडाउन हितरा सेंट्रल गवर्नमेंट लॉकडाउन कला टोटल कंट्री रा हम लॉकडाउन हला सेकंड टर्म में कहला ना सब स्टेट निजर रिक्वायरमेंट हिसाब रे लॉकडाउन किबा रेस्ट्रिक्शन सब लगे दैट मींस ताकर रिक्वायरमेंट हिसाब रे से माने से जगह रेस्ट्रिक्शन लगे द रेंज एक्सेप्शन इज जस्ट लाइक दैट मींस it is not the actual exception means the statement you are written it is not actual exception but in the specific application you require somehow that to handle that kind of or to maybe if the user is giving any wrong information it will shows an error so for that reason we are using range exception range exception is actually used for handling like the user defined type of exception depending upon your application requirement so right to range an exception range statement is used followed by a exception class name
exception can be provided with a value that can be given in the parentheses. To access the value, as keyword is used, E is used for a reference variable. So here, E is called as the reference variable. E is called as the reference variable. Hello is the exception value. Okay, hello is the exception value. Okay, so the exception and me. Custom exception. Creating your own exception class or user-defined exception are known as custom exception. Okay, creating your own exception class. निजे गोटे exception class define करियो that करियो custom exception. Class error in code define करा. एटा है constructor. एटा होची INIT constructor. तो एठी हमें try and except statement एटी यूज करो. This is a custom exception, right? Next chapter होची file IO. So before you read or write file, you have to open the file by using Python open function. File read and write operation. Open method is used to opening a file. तो हमें तरह file mode रे काम करिया. तो हमें file name the file name argument is a string value that contains the name of the file that you want to access. Access mode determine the mode in which file has to be opened. Read, write, append हम file को open करिवा को purpose. Read पाई करिवा कि write पाई करिवा कि append पाई करिवा. Append माने हमें join करिवा next. Buffering, if the buffering value is set to 0, no buffering takes place. Buffering करता होची कौन? जितना हमें file को read करूचे तमे केमते रीड को जा बिफोर यू कैन रीड माने आज गोटे सेंटेंस हिसाब रे रीड करू किंतु जते बेले फाइल ता रीड करे से गोटे सेंटेंस हिसाब रे रीड करेनी से गोटे गोटे कैरेक्टर हिसाब रे रीड करे तो सेति पई हमें यूज करछे बफरिंग फाइल रे बफर यूज बफर रे का होबो ना हमर
जहां भी डेटा अछि ताको स्टोर करबा गोटे जगह रे आ से लोकेशन हमें एट ए टाइम ताको रीड करबा ताको जो बफरिंग कर फाइल नेम एक्सेस मोड एंड बफरिंग तो फाइल डिफरेंट मोड अछि ताको देखिबा देखो फाइल नेम